Done, ma'am. Done? All correct? Yes. Three are wrong. Three are wrong. How? How did they go wrong? कौन सी गलत है? Clerk, last second, they are at $199. What did you write? It's नहीं, दे आर आएगा ना, क्योंकि सन ग्लासेस इज प्लूरल, करेक्ट? सो प्लूरल चीज़ों yes. की हम बातें जब करते हैं तब हम दे आर यूज करते हैं. ओके. Can you explain, repeat one and one sentence and that? ओके, वन सेकेंड. दिस दैट दोज हम यूज करते हैं, दे आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव्स, करेक्ट? Now, this and these are used for nearby objects, correct? And Yes. that and those are used for far away objects, the things that are not close to us. Okay, now this and these, इनमें डिफरेंस क्या है? दिस यूज होता है सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, एंड दीज Yes. यूज होता है प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए. आई विल से दीज फोन्स, of course our noun will also become plural over here, and I will say this phone. Okay, Yes. that यूज होता है अगेन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, बट समथिंग दैट इज फार अवे. आई विल से दैट कबर्ड. ओके, एंड दोज यूज Yes. होता है फार अवे ऑब्जेक्ट्स बट प्लूरल. ओके, Plural. सो आई विल से दोज बुक्स. क्लियर? देन होता है Yes. वन एंड वंस. वन एंड वंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं हमारे. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ओवर हियर. हम प्रोनाउंस की तरह इन वर्ड को यूज कर रहे हैं. यू नो दैट इन इंग्लिश वन वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर यूजिंग इट इन, करेक्ट? सो ओवर हियर हम वन यूज कर रहे हैं टू टॉक अबाउट, to replace the noun basically, and to talk about a singular object. Okay, so if you ask Yes. me, can you please repeat that topic? So I will ask you which one. You will say that one. Okay. समझ में आ रहा थोड़ा? Yes. Same way, if you are, when you said I made some mistakes, which ones? Okay, I might ask you कौन से वाले में mistakes किया? In which exercises did you make mistakes? I might ask you which ones. ठीक है? तो once का pronunciation z का रहता है, once. Okay, and हम बोले कौन से वाले में मिस्टेक किया. That's how we are trying to use. मराठीमध्ये पण आपण म्हणतो ना हे वाला आणि ते वाला, बरोबर? सो Yes. सेम वे यर वी आर यूजिंग वन एंड वंस. वन एंड वंस जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज कर रहे हैं. अंडरस्टूड? And Yes. then we had the last rule that some nouns, when we use them, we always use them in plural form. In same category we looked at the word jeans, denims or trousers we can say, जो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट में था यहाँ पर. एंड देन वी लुक्ड एट द वर्ड spectacles and sunglasses also. That is why in your exercise number 5, number 3, the exercise that you just solved, हम sunglasses को they are बोलेंगे, क्योंकि sunglasses is plural. इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन सन ग्लासेस, फिर भी वो प्लूरल ही होगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. क्लियर? Yes. ओके, लेट्स मूव अहेड देन. We finished this listening exercise, correct? Next, over Yes. here, we have a quick vocabulary exercise which I want you guys to do. Over here, you can see different things which are given. Now, whenever we talk about objects, we either take the name of the color. Okay, you might ask where is my pink shirt or where is my yellow t-shirt, correct? That's how we ask it. Or we take the name of the material that it has been made from, correct? You might ask where is my gold ring, where is my leather jacket, correct? So the name of the material over here that we use, वो यहाँ पर दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज कॉटन, देन रबर, गोल्ड, सिल्क, लेदर, सिल्वर, प्लास्टिक एंड वुल. आई जस्ट वांट यू to match them quickly. Fill in the blanks quickly, basically.
Where is my shops? Done, ma'am. Done. Shivraj. Yes, ma'am. Done. Okay. Tell me the answers quickly. A silk tie, a rubber bracelet, a gold ring, Bracelet. It's bracelet. bracelet, Hmm. a gold ring, Hmm. a cotton shirt, A a leather leather jacket. jacket. Hmm. Okay. Shivraj, continue. A leather jacket. Silver earrings. Hmm. Uh, rubber boots Hmm. and wool socks. Wool socks, or we can say woolen socks also. Okay, woolen Yeah. भी बोलते हैं बहुत बार. Now earrings will always be plural again because वो हमेशा जोड़ी में आते हैं, and boots will always be plural again. These words are again that we use in plural form always. Okay, That's me. understood? Okay, Yeah. write down this rule quickly. Done, ma'am. Okay. Next, now over here we have a conversation. I want you guys to quickly read the conversation. Here we can see in the picture that two people are shopping, and of course there is a sales clerk also. Clerk's part I'll say it, not a problem, but you guys can go ahead and read Brett and Lisa's part. Okay, Shivraj, you can start. Yeah. These wool sweaters are These, really nice. these, these wool Sorry, sweaters. ma'am. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. Continue. But the green one. Why? It's look warm.
It looks warmer. It looks warm. Warmer. Wow. ER है. Warm. Mhm. That's true, but I think I prefer the blue one. Mhm. It's more stylish than the green one. Hmm. There is no price tag. Excuse me, how much is this sweater? It is $139. Would you like to try it on? Yeah, no, that's okay, but thanks anyway. You're welcome. Okay, so here we can see that okay, they are doing comparison between two. Correct? That's what we are going to look at today on how to talk about comparisons. Okay, so first they start off with okay, these wool sweaters are really nice. Which one do you like better? मतलब ज़्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है? Correct? So Lisa says, let's see. I like the green one more. मुझे मतलब मुझे ग्रीन वन ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वो बोलता है ग्रीन वन वाई इट लुक्स वार्मर ज़्यादा गर्म दिख रहा है वो बट ब्रेड सेज आई प्रेफर द ब्लू वन सो दैट इज हाउ अगेन वी कैन टॉक अबाउट प्रेफरेंस इट्स मोर स्टाइलिश देन द ग्रीन वन ओके क्यों उसको अच्छा लग रहा है वो भी वो बता रहा है देन शी सेज देयर इज नो प्राइस टैग ऑफ कोर्स दे आस्क द सेल्स क्लर्क इट्स $139 मे बी इट्स आउट ऑफ हिज बजट सो ही डजंट इवन वांट टू ट्राई इट ऑन मतलब क्या उसने वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन मतलब क्या उसको एक पहन के देखना। हाँ ट्राई करना चाहोगे क्या ठीक है बट मे बी इतना महंगा है कि उसको ट्राई भी नहीं करना है वो ओके नाउ लेट्स लिसन टू द सेम कॉन्वर्जेशन क्विकली जस्ट गिव मी 1 second टू प्ले दैट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन ओके How much is it? Yeah, I red and yellow. I'm hungry. सेकेंड These wool sweaters are really ओके इज इट ऑडिबल टू यू गाइस क्लियरली Yes, Yes. ओके nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one. Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. There's no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. okay clear now we are going to listen to the second part of the conversation here again Brett and Lisa are discussing you have to focus on the question what does Brett buy and what does Lisa think of it okay excuse me sorry I'm really sorry what does Brett buy मतलब Brett क्या खरीदता है and Lisa को वो जो खरीदता है उसके बारे में क्या लगता है that's what we have to try to focus on okay Page 19, Exercise 9, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Brett buy? What does Lisa think of it? Wow. That sweater is really expensive. I don't want to spend that much money. Oh, look. There are some things on sale over there. Oh, you're right. These shirts are really nice. And they're cheap, too. I like this one. Is it cotton? Let's see. Yes, it is. It looks nice on you. The colors are really cool. Great. I'll take it. what does Brett buy Cotton t-shirt. okay and what does Lisa think of it वन वर्ड आंसर्स नहीं देने हैं पूरा सेंटेंस में आंसर दो Brett buy a buys cotton t-shirt. yes I Buys a, simple present tense buys buys a cotton t-shirt. and what does Lisa think of it Lisa likes it correct what does Yes. Lisa think of it so she likes it okay that will be your answer over here now let's go to the grammar part as I told you here we are going to learn how to talk about comparisons and then we are also going to look at how to talk about preferences okay now
the way I told you, here they are talking about preferences. Now the first thing that we do is that whenever we want to talk about preference, we use degrees of comparison. Okay, what do we mean by degrees of comparison? Tall, taller, tallest, जो हम बोलते हैं ना, वो उसको बोलते हैं degrees of comparison. Again, here we are using adjectives. Adjectives हमने last class में देखा था. Adjectives are nothing but the words that tell us or give us more information about nouns and pronouns. Correct? Now जब हम कंपैरिजन भी करते हैं तब हम इनको ही एडजेक्टिव्स को ही यूज करते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट फॉर्म दैट वी यूज इज द पॉजिटिव डिग्री. द वर्ड tall, it's in positive degree. Here, if we are talking only about one thing or one person, then we will use positive degree. Okay, I will say Vinay is a tall boy. So here I am only talking about Vinay. I am not talking about anyone else. Clear? But if I'm talking about two people or two things, then I will use comparative degree and I will use the word taller than. Okay, I will use the words taller than. Example, Vinay is taller than Abhishek. Okay, so here I'm talking about two people. Same way I can talk about two things also. Now understand this कि हम comparative degree of adjective तो use कर ही रहे हैं, which is taller, but taller के बाद में हम than ये word भी use कर रहे हैं. Okay, third form is superlative degree, that is tallest. If I'm talking about more than two people, I will use superlative degree. I will say Vinay is the tallest boy in the class. Vinay is the tallest boy in the class. So here I am comparing Vinay to the whole class and I am saying the tallest. Okay, तो tallest के साथ में superlative degree के साथ में हमेशा the ये word आएगा. ठीक है? Clear with this? Yes, sir. Okay, now two rules that you should know. Not all the words change into er and est. ओके, जब हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, कभी कभी स्पेलिंग रूल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट. ओके, एंग्रियर का वाई निकल जाएगा एंग्री वर्ड का एंड IER लग जाएगा वहां पर. ऑफ कोर्स इट कम्स इनटू स्पेलिंग रूल्स बट यू शुड स्टिल नो. ठीक है, एंग्री, एंग्रियर, एंग्री ANGRY, वाई से एंड होता है, बट जब हम उसको एंग्री ईयर करते हैं ANGRIER कर देंगे हम. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट रूल दैट यू शुड नो एंड सेम गोज फॉर एंग्रीएस्ट, IEST हो जाएगा वहां पर. ठीक है, सेकेंड रूल, नॉट ऑल द वर्ड्स कैन बी चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म. फॉर एग्जांपल द वर्ड ब्यूटीफुल, अगर ब्यूटीफुल को मुझे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को मुझे या फिर द वर्ड इंटेलिजेंट, इन दोनों वर्ड्स को मुझे अगर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में करना है तो हाउ विल आई यूज इट? इफ आई वांट टू से विनय इज डैश देन अभिषेक एंड मुझे वर्ड ब्यूटीफुल यूज करना है, तो कैसे बोलेंगे हम? क्या हम ब्यूटीफुलर बोलेंगे? नहीं मैम, नहीं, फिर क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव आएगा वो. पक्का? हाँ. हम वर्ड मोर यूज करेंगे. Okay, when the words cannot be changed into comparative or superlative form, we use the words more and most with them. Okay, I will say Vinay is more beautiful than Abhishek, or Vinay is more intelligent than Abhishek, and Vinay is the most beautiful boy in the class. That's how I will say it. Understood? Or most intelligent boy in the school. That's how I will say it. Clear? Now, same way you should remember, जो वर्ड्स हमारे हमेशा ER EST में चेंज नहीं होते हैं या फिर चेंज होते हैं, सॉरी, या फिर द वर्ड टॉलर विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इनके साथ में हम मोर यूज नहीं करेंगे. ओके, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ये दोनों वर्ड्स के साथ में हम मोर या फिर मोस्ट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दीज वर्ड्स कैन बी चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. करेक्ट? सेम वे हमारा होता है गुड, बेटर, बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट ये होता है इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स. सेम वे होता है बैड, वर्स्ट, वर्स्ट. सो
आई विल नॉट से इट्स मोर वर्स, क्योंकि वर्स ये ऑलरेडी कंपेरेटिव फॉर्म है. आई विल नॉट से इट्स मोर बेटर. बेटर ये वर्ड ऑलरेडी इन कंपेरेटिव फॉर्म है. आई विल नॉट से मोस्ट बेस्ट. बेस्ट ये ऑलरेडी सुपरलेटिव फॉर्म है. Okay, so with these words we will not use more and most again. जो words change नहीं होते हैं comparative या फिर superlative में, उनके साथ में ही हम more and most use करेंगे. That's the first rule. Okay, second rule actually. उसके बाद में आता है third rule, that is some words are already in their superlative form. Okay, so we do not use more or most with them again. जब हम बोलते हैं यूनिक, जब हम बोलते हैं आइडियल, ये सारे वर्ड्स ना खुद में ही यूनिक है एंड दे ऑलरेडी आर इन सुपरलेटिव फॉर्म. सो व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स हम इनके साथ में मोस्ट यूज नहीं करेंगे अगेन. ठीक है. फिर आता है कुछ एडजेक्टिव्स जो एंड होते हैं ओ आर से. फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सारे ओ आर से एंड होते हैं ना. मोस्टली हम वर्क एनवायरनमेंट में ये वर्ड्स यूज करते हैं. ही इज जूनियर, ही इज सीनियर. करेक्ट. तो इनके साथ में हम वर्ड टू यूज करेंगे, दैन नहीं यूज करेंगे. ही इज सीनियर टू मी. आई विल नॉट से ही इज सीनियर दैन मी. दैट्स इनकरेक्ट इंग्लिश. ओके. ही इज सीनियर टू मी. ही इज जूनियर टू मी. समझे. नेक्स्ट आता है वर्ड प्रिफर. नाउ द वर्ड प्रिफर इज ऑलरेडी इन काइंड ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म. ओके. जब हम वर्ड प्रिफर बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ओके ये दोनों में से मैं ये ज़्यादा प्रिफर करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू प्रिफर, टी और कॉफ़ी, सो यू विल से आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी. आई विल नॉट से आई प्रिफर टी मोर. you will not say I prefer, I don't know, more या फिर most word नहीं आएगा उसके साथ में mainly. ये याद रखो. ठीक है. अगर word prefer यूज कर रहे हैं, दूसरा उसके साथ में than नहीं आएगा, to आएगा. I prefer tea to coffee. That's how you will say it. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे जो वर्ड्स है, एक मिनट. हाँ, द वर्ड एल्डर एंड एल्डेस्ट जो हम यूज करते हैं ना, द वर्ड एल्डर एंड एल्डेस्ट. एल्डर एंड एल्डेस्ट ये हमेशा ब्लड रिलेशंस के लिए यूज होते हैं. ठीक है. 1 मिनट है शिवराज. सिर्फ हमारे एल्डर एंड एल्डेस्ट ये हमारे सिर्फ ब्लड रिलेशन के लिए यूज होते हैं. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, if I'm talking about my sister, or if I'm talking about my children or kids, that's when I will use elder or eldest. अगर मैं किसी बाहर के पर्सन की बात कर रही हूँ तो I will not use the word elder. I will not say my boss is elder to me, क्योंकि बॉस मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है. करेक्ट. बट माई ब्रदर आई कैन से ओके ही इज यंगर और ही इज एल्डर टू मी, और ही इज द एल्डेस्ट. एल्डेस्ट इज आर अगेन आर सुपरलेटिव फॉर्म. ओके. एल्डर मतलब बड़ा, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, फर्स्ट बॉर्न. एल्डेस्ट ELDEST, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा. फर्स्ट बॉर्न जो होता है उसको हम एल्डेस्ट बोलते हैं. यस शिवराज, यू आर आस्किंग समथिंग. यू आर ऑन म्यूट. इसका मैम वो स्लाइड नहीं था क्या, वो वाला आप एग्जांपल दे रहे थे ना वाला? नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा रूल्स है, मैं थोड़े आपको बता रही हूँ. इसका स्लाइड नहीं है. ठीक है. थोड़े एक्स्ट्रा रूल्स है क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक्स होते हैं इसमें, इसके लिए आई एम टेलिंग यू. ओके. द मेन रूल दैट यू नीड टू नो फॉर दिस conversation that we just looked at is degrees of comparison. but again कुछ लोग elder गलत वे में यूज़ करते हैं. elders prefer, again इसमें है prefer, but फिर भी prefer अलग गलत वे में यूज़ करते हैं. senior junior ये words गलत वे में यूज़ करते हैं, इसलिए I'm explaining that. okay, clear? so you will say he is elder to me, okay, or I have an elder brother, or he is the eldest brother. That's how you will say it. Or you can also say I am the eldest one. अगर तुम first born हो तो you will say I am the eldest one in the family. ठीक है. That's how you will use it. Clear? अगर बाहर का कोई है तो you will say older. Again, non living things के लिए हम elder eldest यूज नहीं करेंगे, but non living things के लिए हम older ये word यूज कर सकते हैं. ठीक है.
older and oldest. Clear? ओके, राइट डाउन दिस रूल क्विकली एंड मैंने जो बाकी के रूल्स एक्सप्लेन किए वो भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखो. Done? No, ma'am, last one. Okay, finish fast. Write your own examples also. Done, ma'am. Okay, now let's look at the examples quickly. Over here, you can see that again they are using the word prefer. If I ask you, if I'm making the question, I will ask you which sweater do you prefer. You will say I prefer the blue one. Okay, of course I'll give you two things to ask which one do you prefer.
you can say it's nicer than the green one. Okay, one तो हमने already देखा है कि कैसे यूज करते हैं. If I ask you which one do you like more, मतलब ज़्यादा कौन सा पसंद आ रहा है, so you will reply I like the blue one more. Like ये हमारा verb है यहाँ पर. Okay, I like the blue one more, and then you will give me the reason. It is prettier than the green one. Which one do you like better? अगर मैंने क्वेश्चन वैसे पूछा है तो आंसर भी वैसे ही करोगे. I like the blue one better. It is more stylish than the green one. ओके, मोर स्टाइलिश, बिकॉज स्टाइलिश ये वर्ड हम कंपेरेटिव फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हम यूज करें मोर स्टाइलिश. क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर टेस्ट पर्सपेक्टिव. ओके, नाउ try doing this exercise quickly. In the picture you can see there are two things given. Okay, accordingly try to fill in the exercise. Do it quickly. Tell me once you're done. Do the exercise properly, then cross check your answers also once. Okay, before telling me the answers. Yes, Shivraj. या मैम हो गया. हो गया? इस हाँ, Okay. which of ये इसमें बस यही डालना है ना मैम कि जो उसमें ये हाँ, लिखा जो है. वर्ड ब्रैकेट में दिया है, you just have to हाँ change it into comparative. If the word हाँ, than is needed, then you will use the word than, and that's how you'll complete the exercise. Okay. या. Let Ankita also finish quickly, and then we'll discuss the answers.
Done now. Okay. Quickly tell me your answer. Number one, Shivraj, you can start. Uh, I prefer the leather one. The design is nicer and It looks. It looks. it looks uh, expensive. The wool one. Dan आएगा ना द क्या होता है I- more It look expensive you have to change it to comparative na and more it look expensive more expensive. The it wool one. looks correct pronunciations it looks It looks more expensive than wool one. then the wool one then the wool one Than okay the wool one. हाँ घाई नहीं करनी है pronunciations क्लियर करने हैं ठीक है हम मैराथन नहीं भाग रहे हैं फास्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज क्लियर प्रोनाउंसिएशंस ओके अंकिता नेक्स्ट These t-shirt are nice. टी Which one शर्ट्स do आई you जस्ट सेड भागना नहीं है करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस प्लूरल है तो टी these शर्ट्स these t-shirts are nice. Which one do you prefer? B. I like the green and white one better. The colors are prettier, Green one better. The colors prettier. are hmm prettier. It's more it attractive is than the it gray is and black one. it It is is more more attractive attractive than the gray and black one. very good number 3 shivraj I guess the ones more. I like the silver ones more. They are bigger than the gold ones, and more. They are more than cheaper. more than क्यों more cheaper सॉरी मोर चीप या फिर चीपर More चीप का cheaper. चीपर होता है ना यहाँ पर दिया है ना हमारे इसमें चीपर ठीक है now your task is for homework you guys are going to write down 5 adjectives every day and along with the 5 adjectives you are going to write down their comparative and superlative form also that's how we increase our vocabulary okay of course I'm sharing the worksheets with you which are going to help you guys but along with that I am also going to focus on this part that you also need to improve on your vocabulary on your own also okay and if you have any confusion in any of the adjectives you can reach out to me of course now next over here we have a writing exercise okay in this exercise you guys have to compare the prices of 4 objects or 4 things in India to USA okay first one is you will write about a cup of coffee then a movie ticket, a paperback novel, and a video game. Paperback novel मतलब अपना hard copy novel basically. Okay, a movie ticket, a cup of coffee, and a video game. यहाँ पर tentative US के prices दिए हुए हैं, but you guys can Google quickly what are the prices of these objects in India and what are the prices of these things in US. And I want you to write using comparative degree. Start कैसे करना है? Right hand side में दिया हुआ है, right hand side में. You can take this as an example and you can write accordingly. I want at least one paragraph which has 10 to 12 sentences. Okay, you guys can start writing. अंडरस्टूड ना क्या करना है प्राइजेस हाँ कंपेयर मैम. करने हैं 4 चीज़ों के जो यहाँ पर दिए हुए हैं यू कैन गूगल द प्राइजेस आई एम नॉट आस्किंग यू कि खुद की मेमोरी से लिखो प्राइजेस आप गूगल कर सकते हो टेंटेटिव प्राइजेस कितने हैं इन चीज़ों के इंडिया में एंड यूएस में एंड देन यू कैन राइट अकॉर्डिंगली ठीक है आई गिव यू 10 minutes फॉर दिस टास्क Many things are more expensive in my country.
I will be back in 2 minutes, okay?
Done? Are you guys done writing? Ankita, Shivraj? Yes, ma'am. Okay. Send me the pictures of what you have written. Okay, I'll correct it and like share the feedback with you. Both of you, Shivraj. नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ. Okay, finish it and send a picture to me in my personal message, or you can send it on the group also if you're comfortable, and we will discuss it in tomorrow's class. If there are any corrections, I will send you accordingly. Your task is to revise everything that we have studied till now. Okay? मैम ये क्लास रिकॉर्डिंग किया है क्या आज का? Huh. अब मैम थोड़ा शेयर करना है इसका थोड़ा Sure, sure. वीडियो. I'll do या that. ओके. Okay, I'll do that. ओके. Okay, then I will see you guys tomorrow. We will start with unit number 4 tomorrow. Okay? ओके. Yep. Okay, then your task is, as I told you, to revise everything that we have studied till now, because if you do not understand what we have studied till now, you will not be able to understand what we are doing in further chapters. Okay? So it's very important. Clear? Understood? यस मैम. Yes. Okay, then I will see you guys tomorrow. Have a great day ahead. मैम.